Hello friends, welcome to the part 2 of technical terms used in accountancy. We are going to start where we left off. So, the next term, which is 29th term, is solvent. Now, we would wonder what is solvent. So, solvent is a situation where you are liable to pay someone, means you have a liability towards a person or a firm, and you clear that liability. That person is said to be solvent. अब ये solvent यानी क्या? Solvent वो व्यक्ति है जिसके पास पहले एक उधार था, किसी पर्सन या फर्म के साथ कोई उधार था और उसने वो पूरा का पूरा चुका दिया, इसीलिए वो एक सॉल्वेंट है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्म over here is insolvent. Now what do you mean by insolvent? So insolvent is complete opposite of solvent. So as solvent was the person who has cleared their debts, insolvent are the people who are not able to clear their debt. Okay? Insolvent solvent के complete opposite है. इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना उधार जो उन्होंने लिया है वो अच्छी तरह से चुका नहीं पाते. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म विच इज एक्सपेंसेस. सो व्हाट आर एक्सपेंसेस? सो एक्सपेंसेस मीन्स आर द कॉस्ट और विच इज incurred while running a business, right? So whatever the amount of money which is incurred or spent while running a business or an organization is known as expenses. Expenses क्या होते हैं? तो वो पैसे होते हैं या फिर हमारा खर्चा जो होता है, जो वो पैसे जो हमें ना लगातार यूज़ करने पड़ते हैं हमारे बिजनेस को बनाए रखने के लिए, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं. नाउ एक्सपेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: रेवेन्यू एक्सपेंसेस, capital expenses and deferred revenue expenses. Okay, so wait a minute. Deferred revenue expenses. So these are the 3 types of expenses in expenses. So first is revenue expense. Revenue expense are the expenses which are for a short period of time. Okay, so these are revenue expenses. An expense which makes the company gain an asset is known as capital expenses, and deferred revenue expenses are those expenses which are of revenue nature, means you are spending the money for a short period of time, but they have an effect for a longer period of time. For example, if you are spending money to buy a computer system for your company, that is a capital expense. If you are spending money on advertisement, that is a deferred revenue expense. Okay, and if you are spending money to repair your broken printer in the office, that is a revenue expense. Okay, so these are the 3 types of expenses in the accounting. Okay, now we will move on to our next term, which is revenue or income. And income. Now what does revenue or the income mean? Revenue and income are mostly the same thing. It means the things that we have earned. Means after selling an item, the amount that we have earned is known as revenue or income. It does not mean profit. It means how much the customer has paid for your goods or how much the other company has paid for what you have supplied. That is revenue. Revenue क्या होता है? तो revenue वो चीज़ होती है जो आपने कमाई होती है, राइट? आपने कुछ सामान बेचा तो उसके ऊपर आपने जितनी कमाई की वो रेवेन्यू होता है. रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम नहीं है. प्रॉफिट है ना, जब आप दोनों को माइनस करते हो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, तो जो अमाउंट बचता है उसे प्रॉफिट या लॉस कहते हैं. लेकिन ये जो है वो आपके सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू.
So these are revenue receipts and capital receipts. ओके, सो इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी डे टू डे एक्टिविटी, हर रोज के जो एक्टिविटीज होती है उनसे जो इनकम निकलता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स. ओके, एंड रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी इज नोन एज कैपिटल रिसीट्स. लाइक if you have given a loan to some other business and they repay that loan, it would be an capital revenue, and whenever you earn revenue through the sale of your finished goods, it is known as revenue receipts. Okay, so I will write it down here for space, and we will move on to our next term, which is bad debts. So what are bad debts? We know that debts are the which we have provided money to someone as a loan, that is known as debts. But what are bad debts? So when the person to whom you have provided the money becomes bankrupt or is unable to pay back that loan, so that amount is turned into bad debts, the debt which has gone bad, right? Because you can't recover it anymore. तो bad debts क्या होते हैं? तो कुछ वो ऐसे कर्जे होते हैं जो आप वापस रिकवर नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि आपने जिनको कर्जा दिया है या तो वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं या फिर है ना वो अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको वापस पैसे दे पाए. तो वो उस टाइम पीरियड के कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उसे कहा जाता है बैड डेट्स. सो नेक्स्ट टर्म ओवर हियर इज बैड डेट्स रिकवर्ड. So what is bad debts recovered or bad debts recovery? So the amount of debt which we had written off as bad debts, okay, now we have no hope for that money to come back, but unexpectedly they try to settle it, right? They settle it after some time after you have written it off as bad debts, so that whenever that money comes, so we write it as bad debts recovered or bad debts recovery. So bad debt recovery क्या होता है? जिस डेट को आपने पहले लिख चुके कि अभी ये बैड डेट है, आपने होप छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो सामने वाला शायद आपको वापस पैसे दे पाए, तो आपने वो बैड डेट्स करके तो अभी छोड़ दिया है ना, तो अभी आप वो उसे वापस रिकवर कर रहे हो, इसीलिए उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स रिकवरी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज डेप्रिसिएशन. Now you will ask, what is depreciation? So depreciation is the amount which reduces the value of assets. Means we know any asset has a lifespan, right? We can say a car has a lifespan of, let's say, 15 years. So in that 15 years of time, its value will gradually lose some every year some amount of value would be lost in that car, and after 15 years the value will become zero. So the amount which has been gradually reduced every year is known as depreciation. अब ये depreciation क्या है? तो depreciation वो amount है जो हर साल है ना asset की value घटाता है. किसी भी asset का एक time period होता है, उसकी एक life time होती है, तो है ना उस life time के end पे उस asset की value zero हो जाती है, लेकिन हमने उस asset की कोई तो value होगी उसके starting of the life time पे, तो उस यहाँ तक आने के लिए हर साल कुछ थोड़ी सी वैल्यू है ना निकलती होगी, राइट? तो उस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. ओके, सो वी विल आस्क नाउ व्हाट इज डिस्काउंट. सो एज वी नो there is a sale, so we get any discount like 80% off, 50% off, 25% off. So the amount which has been provided means cut off, means you do not have to pay any that particular part of the amount, that is known as discount. तो discount क्या होता है? हमें नॉर्मल आइडिया है, जब भी सेल लगती है तो फिर 25% ऑफ, 50% ऑफ, 80% ऑफ,
ऐसे डिस्काउंट लगता है, तो वो क्या होता है कि हमारी जो 100% प्राइस है उसमें से कुछ पार्ट आपको देना नहीं पड़ता, तो वो जो आपको रिलीफ किया जाता है उस पार्ट से, तो वो जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंट आर ऑफ two types. One is trade discount and one is cash discount. Now if we look at whenever producer or wholesaler allows some of the deduction for the retailer, it is known as trade discount because they are in between of a trade, and whenever that retailer allows that discount for the customer, it is known as cash discount, right? So or we can say that discount allowed to make for the receiver who receives the cash is known as cash discount. So these were the two types of discount. ये trade discount होता है जब wholesaler जो होता है या producer होता है वो जब discount provide करता है तब trade discount, और जब receiver of the cash जो होता है उसको जब discount मिलता है तो cash discount. Now we will move on to the next term, allowance or allowance. Okay, so here this allowance word is somewhat related to let's say the settlement of debt. Okay, so let's say you have given a debt of 5,000 rupees to your friend, but your friend is only able to return like 4,900 rupees. So you say, oh, it's okay, you don't need to return that 100 rupees, we can settle it right between us. So that amount which you let go, that a small amount of 100 rupees, that is known as allowance in our accountancy. तो आपको अगर ऐसे सिचुएशन देते हैं कि आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपये का कर्जा किया, अब वो कुछ वजह से है ना वो सिर्फ 4,900 रुपये ही वापस कर पा रहा है, 100 रुपये वापस नहीं कर पा रहा, उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी टाइट है, तो आप बोलते हैं कि 100 रुपये जाने दे, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो 100 रुपये जो आपने छोड़ दिए हैं ना उसको बोलते हैं अलावेंस अकाउंटेंसी में. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म विच इज़ cost. So now what is cost? Cost is a type of expense, right, which we incur while producing something, right? So expense can be on a machinery, means we bought a machinery, that is an expense, but it has nothing to do with the cost of the product. Then cost is the summation of all the expenses or of the work which adds up to that product. You know, जैसे कि है ना, for example, while making a shirt, the cost of the fabric, then the cost of the labor work is all added up, and then you get the shirt for like 200 rupees worth of shirt. That is the cost, or let's say the cost of the product. तो आपको cost तो पता होगा, cost जो हम लोग पे करते हैं अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो समेशन होता है किस चीज़ का, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेस में थोड़ा जो अमाउंट खर्च आया है तो उसका जो समेशन है, और जो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि ये इस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, दैट वैल्यू इज नोन एज कॉस्ट. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टर्म विच इज प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट एवरीवन नोज. When your income is more than your expenses, the difference it comes out to be profit or your gain. जब भी आपकी जो इनकम होती है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है और जो अमाउंट का डिफरेंस आता है वो अमाउंट होता है आपका प्रॉफिट या फिर गेन. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म और हियर इज लॉस. सो लॉस इज द अपोजिट सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट. सो वेन एवर योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम और रेवेन्यू, and that amount difference amount is known as loss. तो लॉस जो है वो प्रॉफिट के एकदम अपोजिट है. तो जब भी आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज़्यादा होते हैं तो जो डिफरेंस होता है अमाउंट का उसे हम कहते हैं लॉस. नाउ विथ अवर नेक्स्ट टर्म विच इज ग्रॉस प्रॉफिट. प्रॉफिट और गेन मीन्स
gross profit or gross gain. What exactly it is? So we remember, if we move back to the final account, so there is a term. So in the trading account, which is the first account we make in our final accounts, the end result, whenever our expenses and our incomes, when our purchases are less than our sales, so that the amount, difference amount comes out to be the gross profit. Overall मोटा मोटा क्या profit आया है वो gross profit होता है. So trading account, whenever we make a trading account, when our sales side is more than our purchase side, so that difference amount is known as gross profit. So on which side it would show? It would show on the debit side of the trading account. Similarly, we have a gross loss. So what is gross loss? It is completely opposite of gross profit. So whenever that purchases you made are more than your sales side, at that time the difference comes out to be gross loss. कि मोटा मोटा कितना loss हुआ है, right? So it is shown on the credit side of the shows up in the credit side of the trading account. Okay. Next we have net profit. Right? So net profit or net gain, let's say it shows as a gross profit shows up in the trading account, the net profit shows up in the profit and loss account after all the expenses we have incurred, all the income that we have gained, right? The difference. So whenever that income is more than your expenses, you come out to be a net profit, and whenever that expenses are more than your income, it comes out to be a net loss. So right, तो दो टर्म्स हो गए. So जब भी आपके जो P&L में इनकम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एक्सपेंसेस से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और जब भी आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होते हैं तो आपका आता है ग्रॉस लॉस. सेम वे डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. So now we have reached the last term of our technical terms of accountancy, which is balance sheet. Okay, so what we know about balance sheet? So balance sheet, we know that is a financial statement which is made at the very last, right? It shows how much assets you have got and how much liability and capital do you own, right? How much assets do you own, how many liabilities you're to be paid off, how much capital have you invested in the business. It is a financial statement and it is represented by the equation of assets equals to capital plus liability. तो हमें पता है एक्चुअली बैलेंस शीट क्या होती है. बैलेंस शीट वो फाइनल अकाउंट होता है जो हम लोग सबसे लास्ट में बनाते हैं. वो आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपके सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है. ऑलराइट, वो एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. And this was the conclusion of our technical terms in accountancy or bookkeeping. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please click on the like button, comment under it, share this video with your friends for help them to study, and please subscribe my channel. Thank you.